हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। मेरा खुद के इंस्टीट्यूट डुंडाहेरा गुरुग्राम में है। मैं यहाँ पर पिछले 10 सालों से बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश सीखकर अलग अलग प्रोफाइल में जॉब कर रहे हैं। अब हम आपसे अपने चैनल के बारे में बात करते हैं। यह चैनल मैंने स्पोकन इंग्लिश सिखाने के लिए बनाया है। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ें सिखाई जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के स्टेटस पर लगाएं ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और वो भी इंग्लिश सीख सके और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सके। चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अपने इस चैनल के ऊपर थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। बिल्कुल जीरो क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा आगे। Part-1 आज अभी आपको Part-1 रिलीज होगा। धीरे धीरे करके आपको 100 वीडियोस डाला जाएगा जो आपका कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स होगा। अगर आप ये 100 वीडियोस देख लेते हैं और देखने के बाद जो भी चीज़ें बताई जाती है उसकी प्रैक्टिस करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा, जो रूल्स पढ़ाए जाएंगे उसको लिखना होगा, लिखने के बाद प्रैक्टिस करना है और आपको बात करने की कोशिश करना है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने से अब कोई नहीं रोक सकता है। आप आफ्टर 10 to 15 वीडियोस के बाद ही इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे और 100 वीडियोज आते आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। यहाँ पे हम आपको इस तरीके से सिखाएंगे कि आप कभी भूलिए मत। लैंग्वेज को आपको लैंग्वेज की भाषा में सिखाऊंगा ताकि आप कभी भूले ना। चलते हैं। लैंग्वेज सीखने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंग्वेज है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए देख रहे हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश है क्या है? स्पोकन इंग्लिश एक लैंग्वेज है। स्पोकन इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होता है, सबसे पहले हमें लैंग्वेज के बारे में समझना चाहिए। और आप जो सीखेंगे वो कौन सा लैंग्वेज सीखेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप क्या बताएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज भी है और सब्जेक्ट भी है। सबसे पहले इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है? तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसके बाद सब्जेक्ट है। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज। लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है आइडियाज को एक्सचेंज करने का। तो इसे हम कितनी तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं? लैंग्वेज में अपने आइडियाज को हम दो तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। जो वर्बल होता है, वर्बल में हम वर्ड्स के थ्रू अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। ये आपका एक ओरल लैंग्वेज होता है, एक रिटन लैंग्वेज होता है। यानी वर्ड्स के थ्रू जब हम बोलते करते हैं अपने लैंग्वेज को, तो कैसे ओरल एंड रिटन, दो तरीके से हम करते हैं। तो एक होता है आपका ओरल लैंग्वेज, दूसरा होता है रिटन लैंग्वेज। यहाँ पे जब हम नॉन वर्बल की बात करते हैं तो नॉन वर्बल में हम 3 तरीके से अपनी लैंग्वेज को एक्सचेंज करते हैं। 1 साइन लैंग्वेज, 2 पिक्ट लैंग्वेज, 3 जेस्चर लैंग्वेज। इसको आप गेस्चर नहीं पढ़ेंगे, इसे आप जेस्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज एक मीडियम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। और लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। अब वर्बल में 2 पार्ट होते हैं, नॉन वर्बल में 3 पार्ट होते हैं। तो अगर जो कोई पूछे लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता सकते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन सा? ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, पिक्ट लैंग्वेज एंड जेस्चर लैंग्वेज। सबसे पहले अब हम बात करेंगे ओरल लैंग्वेज के ऊपर। ओरल लैंग्वेज होता क्या है? ओरल लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ ग्रामर। ओरल लैंग्वेज क्या है? ग्रामर का सिस्टम है थ्रू विच वी यूज स्पोकन वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर नॉलेज, आइडियाज एंड फीलिंग्स। ओरल लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ ग्रामर है। क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा, वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे, ये कंप्लीट सेंटेंस ग्रामर के बेस पे लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा। अगर जो यही सेंटेंस विदाउट ग्रामर लिख दिया जाए, जैसे मैंने लिखा गो आर
इन, टू, लर्न, वी, इस तरीके से अगर जो लिख दिया जाए तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए ओरल लैंग्वेज को क्या कहते हैं? ओरल लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ ग्रामर, यानी ये क्या है? एक ग्रामर का सिस्टम है, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? अपने स्पोकन वर्ड्स को यूज करते हैं क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस आवर नॉलेज, आइडियाज एंड फीलिंग्स। अपने नॉलेज को, आइडियाज को और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम ओरल लैंग्वेज का यूज करते हैं। और किसकी मदद से? ग्रामर की मदद से। अब हम बात करते हैं ओरल लैंग्वेज के बाद रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज, रिटन से ही आप समझ जाते हैं कि रिटन लैंग्वेज क्या होता है, जहां पे हम लिख लिख के बात करते हैं। लिख लिख के हम तीन तरीके से बात करेंगे। सबसे पहला लेटर राइटिंग, यानी जब हम लेटर लिखते हैं किसी को तो वो आपका लेटर लैंग्वेज होता है। दूसरा मेलिंग, किसी को मेल भेजते हैं तो मेल से जो बात कर रहे हैं वो आपका रिटन लैंग्वेज होगा। चैटिंग भी हमारा किस में आता है? रिटन लैंग्वेज में आता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा रिटन लैंग्वेज क्या होता है। साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज क्या होता है? साइन लैंग्वेज स्पेशली उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे गूंगे होते हैं। गूंगे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डम्ब, न कि डम्ब। और दूसरा बहरे बच्चों के लिए होता है, बहरे को हम क्या बोलते हैं? डेफ, न कि डिफ। तो साइन लैंग्वेज क्या होता है? साइन लैंग्वेज स्पेशली गूंगे और बहरे बच्चों के लिए होते हैं क्योंकि वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं जेस्चर लैंग्वेज। जेस्चर लैंग्वेज क्या होता है? जेस्चर लैंग्वेज का मतलब होता है जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करते हुए जब हम अपना हाथ दिखाते हैं यानी किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो वो हमारा जेस्चर लैंग्वेज होता है। बात करते हुए बॉडी लैंग्वेज जो हमारा चलता है, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं? किसी चीज को कभी इंडिकेट करें तो वो आपका जेस्चर लैंग्वेज होगा। तो आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा जेस्चर लैंग्वेज क्या होता है। अब जेस्चर लैंग्वेज के बाद हम बात करते हैं पिक लैंग्वेज। बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं कि पिक लैंग्वेज कुछ होता नहीं है, बट बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी मानते हैं पिक लैंग्वेज भी होता है, खास करके उनके लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो वो क्या करते हैं? वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते उनसे अगर जो पूछा जाए, अगर जो वो बोल नहीं पाते हैं तो पिक्चर्स बनाकर लोगों को समझाते हैं। तो इसलिए हम इसे पिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं, बट वैसे कोई लैंग्वेज नहीं होता है ये। पिक लैंग्वेज के बाद हम बात करते हैं कि इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पे इस चैनल पे इंग्लिश सीखेंगे। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या आना चाहिए? सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए। तो सेंटेंस मेकिंग के बारे में हम आपसे अगले अपने वीडियो में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं जो सेंटेंस होता है वो किससे बनता है? वर्ड्स से बनता है। और जो वर्ड्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? लेटर से। लेकिन ये जो लैंग्वेज है, जैसे एक लैंग्वेज, मुझे कोई भी लैंग्वेज बोलना है तो सबसे पहले हमें एक सेंटेंस बोलना है, और वो भी क्या? ग्रामेटिकली वो सेंटेंस अरेंज्ड होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, तो वो आप एक प्रॉपर लैंग्वेज होता है। बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बट जब आप ग्रामेटिकली बोलते हैं तो वो ज्यादा करेक्ट होता है। लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज को पहचान मिलता है सेंटेंस से। जब तक आप सेंटेंस नहीं बोलेंगे तब तक आप लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे। अगर जैसे मैं वर्ड्स बोलूं, एक एक वर्ड करके बोलूं, तो लोग हमें नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको समझना है सेंटेंस मेकिंग, जिसके लिए हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत में लोग कितने तरह से इंग्लिश सीखते हैं। भारत में इंग्लिश तीन तरीके से लोग सीखते हैं। सबसे पहला एकेडमिक, दूसरा एनवायरमेंट, तीसरा ग्रामर। जो एकेडमिक होता है, एकेडमिक में आपके 15% लोग सीखते हैं जो एकेडमिक से। एकेडमिक का मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसे लोग जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे इंग्लिश का माहौल होता है और वो बचपन से इंग्लिश बोलना वहाँ पे सीख जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी इंग्लिश में बात करते हैं। ऐसे बच्चों को बचपन में ही फोनिक्स पढ़ाया जाता है। तो फोनिक्स जैसे ही वो पढ़ते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। और दूसरा, ऐसे बच्चे ग्रामर भी बचपन से ही सीख लेते हैं, तो उनका ग्रामर प्लस प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होता है। उन्हें पता नहीं होता कि वो ग्रामर सीखें, लेकिन जो इंग्लिश की जो किताबें पढ़ते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसमें आप इनके इंग्लिश के ग्रामर होते हैं, धीरे धीरे उन्हें उनके लेवल के बेस पे पढ़ाया जाता है। ये डिपेंड ऑन द बुक ऑफ द स्कूल। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंट। भारत में अराउंड 10% लोग हैं जो क्या करते हैं? एनवायरमेंट से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। एनवायरमेंट से जो लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है उनका एमटीआई प्रॉब्लम बना रहता है, यानी मदर टंग इन्फ्लुएंस बना रहता है। इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये भी बहुत ही पुअर होता है और इनका ग्रामर मिस्टेक होता है।
तो एनवायरनमेंट से जितने लोग सीखते हैं उन्हें फिर आगे आके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद फिर वो अपने इंग्लिश पे और ज़्यादा काम करते हैं। बहुत कुछ लोग ही होते हैं जो इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करते, खुद से पढ़ पाते, बट सारे लोग खुद से नहीं पढ़ पाते। हर एक किसी को एक गाइडर चाहिए जो उसे अच्छे से गाइड करे। तो ऐसे लोगों को भी इंस्टीट्यूट में इनके प्रोनाउंसिएशन पे काम किया जाता है और इनके एमटीआई पे काम किया जाता है। साथ साथ में इन्हें ग्रामर सिखाया जाता है। ग्रामर के बेस पे इंग्लिश बोलना क्यों सीखते हैं हम, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। क्योंकि ऐसे लोग हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। भारत में अगर जो देखेंगे तो मोस्टली 75% हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के नाम के होते हैं, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश का माहौल नहीं होता, तो वो भी बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर की मदद से ही सीखते हैं। तो मैं 75% में उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये जो बच्चे होते हैं ये ग्रामर की मदद से सीखते हैं। सबसे पहले इनको क्या करना होता है, इनको सीखना होता है कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना है, समझना कैसे है। अगर जो ये समझना सीख जाते हैं तो सेंटेंस मेकिंग समझते हैं। सेंटेंस मेकिंग जो समझने लगते हैं तो फिर ये धीरे धीरे बोलना चालू करते हैं, और जैसे ये धीरे धीरे बोलना चालू कर देंगे तो फिर इन्हें धीरे 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 बोलना आ जाता है। तो अगर आप ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में लोग कहते हैं कि आपको ग्रामर पे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको स्कूली ग्रामर नहीं सीखना चाहिए। स्कूली ग्रामर द सेंस आपको कंप्लीट ए टू जी चीज़ें नहीं सीखना है, बट आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इसके लिए आपको हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशंस आर देयर इन इंग्लिश यू मस्ट नो। हम बात करते हैं अपने दो स्टूडेंट्स के बारे में जिनका नाम है मिस्टर जीवन एंड मिस्टर गौरव। ये आपसे इंग्लिश के ऊपर अपने कुछ राय रखेंगे। आप यहाँ से भी कहीं जाएंगे नहीं, 10 से 15 मिनट अगले आप उनको सुनेंगे। इंग्लिश के ऊपर वो अपने प्रेजेंटेशन देंगे और आप उन्हें सुनिए। थैंक यू। Hello everyone, I am Jeevan. I belong to Haldwani, Uttarakhand, and if I talk about my qualification, I have done my +2 from CBSE board and my BCom from Kumaon University. Currently, I have been working with real-time data services as an accountant for 9 months. And if I talk about my hobbies, I like to play cricket and read books. There are 4 members in my family, including me. So as per the given topic, I will be speaking about the English language, its importance and how we can learn it. So English was originated in the part which is now the England, and it was the origination from there. So from there it spread to the world when the Britishers spread their rule in the other countries. They took their language to other countries, so it gained the spread from there. And other thing is when the introduction of printing press was there, then newspaper were printed, magazines were printed, and the books were printed. So they were mostly in the English language. So people like to read newspaper, like to read magazines and books. So it gained the importance from there also. And when the Britishers were spreading their rule in the other countries, so they with them took their language to other countries. So it was widely spread from there also, and people were also loving that language. And day by day, if you will see that English was something else at that time, and day by day it improved. The new words were introduced as the new people introduced the new words, because they like to make some implementation in the English language. As we are a growing economy, and we have new science technologies, we have introduction of internet. So for that also it increased, this spread was increased. So if I talk about the importance, English is very important because it is a globally accepted language. If you will go in any part of the world or in any country, any state, you will see that most of the people know English. If they don't know, they know how to understand English. And there, if you will be traveling, or if you are going to that country, and if you want to convey your message, or if you want to ask about something in that country, so if you know English, that will be easy for you to convey your message or ask about something. So it is important. And if I talk about education in India, if you want to get your admission in a very good university, a very recognized college, or a very good school,
So you should have a very good communication skills, because the certain percentage of admission is based on your communication skill. Marks also matters, but the certain percentage is based on your communication skill. If your communication skill is very good, then you can get admitted to that college, as you will get a chance to be the part of that college. And being a part of a good college is everyone's dream, so it will help you there. And if I talk about the information, anything you are surfing on the internet is mostly available in the English language. So if you know English, or if you know how to understand English, so it will be easy for you to gather more information, or you will be knowing about more facts that are available in the internet. So right now, if you want to skill up yourself in respect of information, so that is available mostly in the English language. And if for you are you like traveling, you like to travel in the part of world, or if you want to see the new things in the part of country or the state, so if you know the English language, as I mentioned that English is a globally accepted language. So if you like traveling and if you know English, then also it will help you for directions. You can ask directions in English, so you will get a good response from the people. If you want to eat the food in that location, or if you want to ask about their culture, and if they know English, then you can also understand them, so it will be easy for you to do that. And if I talk about the career objective, there are most of the opportunities for the people who have a very good communication skills, because right now in this at this time, people who have a very good communication skill has a very better chance of getting a good job from the other people who do not have a very good communication skill. So I guess if you work on your communication skills, so you can get a very good job. So you can do that. And if I say that how to learn English or how to speak English, so there are two parts: learning and speaking. So learning can be done by reading books, reading newspaper, and reading magazines. So you can try to read newspaper daily, or if you don't get a chance to read it daily, you can take a newspaper and you can read it in a week. You can complete it in a week. And if you find some hard words, you can underline that, and you can take their meanings and you can use them in your daily life. And second is, I have said that you can start reading books. So you can start reading books, as reading books enhance your knowledge. It gives you more information, so that is also you can add in your routine. So this way, and you can also join a very good English class, so that you can learn ahead of this newspaper and books, that what is inside the English language, because it is very deep. English language is very deep, so if you want to learn it deeply, then you can join an English class. And if I talk about speaking, speaking is only can be done only if you will speak in front of the people, or if you will express yourself in English in front of the people. So you can try to speak more and more in a day in English. If you are speaking in Hindi, that will give you thoughts in Hindi only. So if you will try to speak in English language, so it will give you thoughts in English language. So you can do it. If you are not having any partner, so you can try it by your own. You can practice alone in front, standing in front of a mirror. So it will also give you confidence, and if it will you will see that how you are speaking, what is your accent, and what is your body language. So it will give you benefit there also. So I guess these practices can be done. And also one thing I can add here is, you can watch English movies, English series, English videos, and you can listen to English songs. You can replace Hindi songs with English songs. So it will give you words in your mind. It will put words in your mind, English words, that will be easy for you in the coming times, that you will be making words in English, and you will not have to translate Hindi to English. The words will come automatically in your mind in English only. So this practice you can done, as I add these routines in these practices in my routine, daily routine. So I have enhanced my skills by adding these routine in my daily routine. And if I talk about my work professional experience, that I am working in a corporate. So my work is to present data to the management and to a team
So that time, if I have a very good communication skills and I am presenting myself in a very good manner and with a very good communication skills, then the data becomes very important to them. So that gives my the importance to my data. So I communicate with them, they understand my language. And in corporate you will be seeing that everyone likes to communicate in English. So that time it gives you recognition, they accomplish your work, and you can add that skill to your corporate life also. So it will give you a very good result. So you can do these things to improve your English, and these things I am adopting to improve my English. Thank you. Everyone, my name is Gaurav Kasi. Basically, I belong to Balian UP, but nowadays I live at Kapasada in New Delhi. In terms of my qualification, I have completed my academics from CBSE board in 2024. Now I'm gonna take admission in a college. My hobbies are befriending intelligent people and reading books. My short-term goal is to becoming a good speaker, and my long-term goal is to becoming a sports journalist. There are 4 members in my family, including me. That's all about myself. As per the given the topic, how can we be a fluent speaker, and how can we learn English as soon as possible? So first one is English. I think English is a language. It's accepted in as a global level. So I think English, with the help of English, we can communicate with people, and we can also talk. We can also express ourselves in front of whole over the world. So for learning English, I think firstly we need to involve ourselves in an environment of English. As like we can say that if the where you are living, I think involve yourself in the environment of English. The friend you have, try to change your friend circle. If your friend are not speaking with you in English, change your friend circle. If you are in a school, your friends are talking to you in English, it will be good for you. But your friend are not talking to you in English, I think you can also change your friend circle. A second one more thing, medium of education. So on the medium of education, when we go in our school, firstly, when we try to adopt any new thing in our life, firstly we face problems. So I think English is also like that. The more you do practice, the more you will be better in that field. So I think English will give also advantage. If you are learning English in the first time, definitely you will face many problems. But after keep trying, you will be able to speak one day also. And third one thing, as like technology, now we have a lots of equipments nowadays. So I think equipments, with the help of equipments, we can also learn English. So I think you have a mobile phone, we can say computer, radio and television. So if you have access of these equipments, I think with the help of it, you can also learn English as soon as possible. If you are watching videos on a YouTube, yeah, on any platform, I think you need to watch that videos in English. If you're listening songs as like English, I think you need to listen English songs. Third one is just like if you're browsing any we can say website, if you're browsing any we can say your phone, I think whatever article are you reading, I think is with the help of I think you can read that articles in English. And third one thing is in a corporate life, in a business life, when we go in a business life, firstly, as we also know that when we start our business, we think like that we must have too many customers. So how can you connect with customer when you know communication skill? So I think English will give you we can say a level of advantage. You can interact with more people. So with the help of English, if there is a person who is coming in your on your shop, but I think he does not know how to speak your native language. So I think with the help of English, I think you can also communicate with them. You can also share your feelings. You also share your ideas in front of him. You can also convince him for your business also. I think English will give you a that of advantage. And third one thing is how I learned English. So when I came first time in Delhi, I did not able to speak. I was not able to speak English. But after joining English Sparta, first time while speaking English, I faced problem because 10 to 15 times. But after kept trying, and after that now I'm able to speak English.